Yeah, hi, welcome to another video. And yeah, in this video, we're going to cover the problems. Actually, the fourth problem of today's biweekly contest 104. And this was the problem. So I hope you read the problem statement carefully because if you are coming directly from the contest, then you must have read the problem statement and you have understood the problem statement, right? But let's understand the problem statement once more so that it's clear for everyone. So basically, there is a vector at a particular index. The power of a hero is given. So power of 0th hero is 2, the power of 1th hero is 1, the power of second hero is 4. So what we have to do is we have to find out the power of all non-empty groups of hero possible. Since the sum could be large, we have to do modulo 10 to the power 9 plus 7. So what is the power of a group? So basically what we have to do is we have to basically find out all the groups. Okay, so there are multiple groups. So the power of a particular group is max of all the elements present in that group chi square into minimum of all the elements present in that group. So product of max square into min is the power of a particular group. So we have to return the sum of the power of all non-empty groups of heroes possible. Since the sum could be large, return it in modulo 10 to the power 9 plus 7. For example, 2, 1, 4. So first group is 2, so the power is 2 square into 2, 8. Second group is 1, so the power is 1 square into 1. Third group is 4, so the power is 4 square into 4. Because when we are considering only one element in the group, then maximum and minimum are same. So max square into min, that will be max is equal to minimum, because for that reason it will be max cube or min cube, whatever we can say. So then the next group is 2, 1. So the power is 2 square, that is maximum, and 1. So 2 square into 1 is 4. 2, comma 4 is then another group. So the power will be 4 square into 2. 4 is the maximum and 2 is the minimum. Similarly, we will do for all the groups possible, and then we will calculate the sum of all the groups. Okay. So as we can see, if we find out all the groups and then we find out the sum, then it will simply exceed the time limit, right? Because nums total length is 10 to the power 5. And if we want to find out all the groups, so we will do it by recursion, and that will be basically impossible to come under the time limit. So that's why we will solve it by using other method. Okay. So let's analyze the problem. Let's say there is a vector 2, 4, 1, 7, 8. Okay, so let's say this is the vector given to us and we want to find out the power of all the groups, of all the non-empty groups to be specific. Okay, so let's say this is the vector. So let's say because in our vector we have to consider maximum and minimum, so it will be easy to sort this vector. And anyway, we are not considering subarray or anything like that. Here we are just talking about groups, and so for that reason, the sequence doesn't matter. That's why what we can do is we can sort it. Okay, so I'm sorting it in descending order. You will understand why in upcoming minutes. So the sorted array will be 8, 7, 4, 2, and 1. Okay, so here what I did is I sorted the array. Okay, now what I'll do is, here is basically the power that we have to return finally. So when there is only one element in the group, then the power of that group is basically the single element that is present ka cube. So let's say for this group the power will be 8 cube, for this group the power will be 7 cube, for this group the answer will be 4 cube, and so on. Okay, so let's remove the headache of single element group and simply write here sigma. I'm not going to calculate this because it will be large values. I'm not going to go into these calculations. So for that reason, I'm simply writing sigma of x cube. ओके, सो हम लोगों ने सिंगल एलिमेंट ग्रुप वाला का काम अपना खत्म हो चुका है. एंड नाउ वी हैव टू केयर अबाउट द ग्रुप्स व्हिच हैज एलिमेंट्स मोर देन वन. ओके, so let's say we are on index 0. Okay, so now
we are on index 0. So one thing is sure, that the power for this, the maximum element present in the group, no matter what is the minimum element or what the other elements are, the maximum element will be 8 square. Okay, so it is 8 square, and then let's traverse the array ahead. So if 7 is the minimum element, then we are talking about, so it will be 8 square multiplied by 7. Okay, and then we come to this 4. So now what the power will be? The power will be 8 square, that is maximum, that we already wrote here, into 4. Okay, but what we can do is, in this group 7 can be there or 7 cannot be there. There are two options, right? तो अगर 7 होता है, then also the maximum element is 8 and minimum element is 4. और अगर 7 नहीं होता है, then also the maximum element is 8 and minimum element is 4. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू चॉइसेस वेदर टू इंक्लूड दिस 7 और नॉट. तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वी विल सिंपली राइट 2 इंटू 4. तो यहां पर 4 क्या है, 4 इज दिस एलिमेंट एंड 2 इज the number of times we encountered this 4 as the power. क्योंकि अगर हम लोग ऐसा एक ग्रुप लेते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम 8 है और मिनिमम 4 है, तो उसके एक ग्रुप पॉसिबल है 8,4 और एक ग्रुप पॉसिबल है 8,7,4. So for that we wrote here 7 plus 2 into 4. Okay, then if we say here, अगर हम लोग इस 2 पे आते हैं, so again 2 is the minimum value now, so 8 square into 2. Now we have two elements here, जो हम या तो ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते हैं. तो for 7 we have two choices and for 4 we have two choices. तो इन दोनों के लिए हम लोग के पास two choices हैं. So for that reason यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 into 2, that will be 4, right? So 4 into 2. Okay, 2 is this value and 4 is basically 2 into 2 because of these elements, right? So here we will write 4 into 2. Then we come to this one. For this one, again the answer will be 2 into 2 into 2, 8 into 1. So here we will write 8 into 1. Okay, now we are done for this end 0. Now let's go for end 1. Here also the maximum element will be 7. So we will simply write 7 ka square. Okay, now we are on this 4. So the minimum element is 4 now. If you're considering this part, the subgroups where the groups where maximum is 7 and minimum is 4. So there is only one possibility for such group. Okay, because there are no element which are in between the two ranges. For that reason, we will simply write here 4. And then we are at this 2. So we have to find out all the groups which are who has the maximum element is 7 and the minimum element is 2. So we have 4 in between. So because we have 4 in between, so there are two cases, either we will include this 4 or we will not include this 4. So basically number of groups with maximum as 7 and minimum as 2 are 2. Okay, so for that reason we will write 2 into 2. Similarly, we will write here 2 into 2 for this 4 comma 2 and into 1. So here we wrote 4 into 1. Okay, so we are done for index 1 as well. Now we are on index 2. Okay, so now when we are on index 2, the maximum value will be 4. So here I'll write 4 ka square. And now let's talk about the minimum element. So for the minimum element, let's say 2 is the minimum element of the group that we are considering right now. Okay, so if 2 is the case, so we have only one group with 4 as the maximum and 2 as the minimum. So for that reason, we will simply write here 2. And then we are at this one. So
what are the number of groups with 4 as the maximum and 1 as the minimum? So the answer will be 2, because there are cases that we can take this 2 or we can leave this 2, right? So that's why the answer here we will write 2 into 1. Then we will go to this index 3, and for this index 3 we will simply write 2 ka square, because 2 will be the maximum element, and there is only one minimum element left now. So what are the number of groups with maximum element is 2 and the minimum element is 1? We have only one group like that. So for that reason we will simply write 1 here. Okay, so see, now we will reach here, but we do not want to care about this, because इसके लिए हम लोग का सिर्फ 1 अगर maximum element है तो हम लोग का सिर्फ एक ही group possible है, in which only one element will be present, और वो group हम लोग यहाँ पर consider कर चुके हैं, right? So for that reason we do not have to care about this one right now. Okay, तो अगर अब हम लोग consider करें इस problem को, तो let's analyze this problem. तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, अगर जो यहाँ पर ब्रैकेट में जो भी चीजें लिखी हैं, let's say it is called as bracket only. Okay, तो हम लोग का जो ब्रैकेट है, बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, what we are doing is when we are on this index 3, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट इज इक्वल टू nums of I plus 1. ओके, और हम लोगों ने उसको क्या किया, फिर when we are on this index 3 we did nums of I का स्क्वायर into ब्रैकेट. ओके, फिर जब हम लोग यहाँ पर आए, सबसे पहले लेट्स से ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, फिर हम लोग यहाँ पर जब आए तो हम लोगों ने क्या किया, इफ वी एनालाइज इट, तो हम लोगों ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया 2 से. तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट इज इक्वल टू ब्रैकेट into 2, and then we added nums of I plus 1, nums of I plus 1. ओके, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने सेम चीज ही करी है, लेकिन ब्रैकेट इनिशियली 0 है, दैट्स व्हाई 0 into 2 is not affecting anything. ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया देन, कि nums of 2 का स्क्वायर into ब्रैकेट. ओके, देन अगेन हियर let's just copy and paste it. तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया, ब्रैकेट ऑफ I ब्रैकेट इज इक्वल टू ब्रैकेट into 2 plus nums of I plus 1, और यहाँ पर भी हम लोगों ने सेम चीज करी. और हम लोग को ये क्या करना है, हम वी हैव टू ऐड ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो अगर हम लोग इन सबको ऐड कर लेंगे, सो वी विल रीच द आंसर. ओके, हम लोग अगर यहाँ पे फिर से एनालाइज करते हैं, तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट 0 है, हम लोग ने क्या किया, ब्रैकेट ऑफ 0 into 2 plus nums of I plus 1, राइट? फिर हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग आए इंडेक्स ऑफ 2 पे, तो हम लोग ने क्या किया, 2 into ब्रैकेट प्लस नम्स ऑफ 2, नम्स ऑफ सॉरी नम्स ऑफ 2 plus 1, बिकॉज यहाँ पर I plus 1 है, सो फॉर दैट रीजन यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 2 प्लस कर दिया. अगेन जब हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो अगर हम लोग नोटिस करें, तो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली 2 plus 2 into 1 को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग ने 2 से, 2 into 2 plus 4 into 1, ठीक है? और यहाँ पर जब हम लोग आए, तो हम लोग ने सेम चीज करी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू को, और मल्टीप्लाई कर दिया नम्स ऑफ I plus 1 से, नम्स ऑफ I plus 1 है 7. ओके, so this is basically the main logic of this problem. Let's code it out now. तो सबसे पहले तो अपने को जरूरत पड़ेगी डिफाइन करने की, हैशटैग डिफाइन ll को लॉन्ग लॉन्ग हैश डिफाइन मॉड को 10 to the power 1 10 to the power 9 plus 7. यहाँ पर हम लोगों ने एक आंसर बना दिया. नाउ वी डोंट नीड एनी वेक्टर, हम लोग इसको ट्रैवर्स करते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग ये जो अपना सिग्मा वाला काम है, इसको पहले कर लेते हैं, कि हम लोग जो सिंगल एलिमेंट्स कंसीडर कर रहे हैं, सिंगल एलिमेंट के ग्रुप से, उसको सबको कवर कर लेते हैं by simply writing answer is equal to answer plus x into x.
ओके, सो यहाँ पर मैंने ये सब क्यों किया, जस्ट सो दैट हमारा जो इंटीजर है वो आउट ऑफ रेंज ना जाए, क्योंकि x जो है वो एक इंट वैल्यू है। सो x इंटू एक्स हम लोग कर रहे होंगे तो वो 10⁻18 चली जाएगी, तो 10⁻18 जाने में वो चली जाएगी आउट ऑफ रेंज चली जाएगी। सो फॉर दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 LL से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि वो अपने आप ऑटोमेटिक टाइप कास्ट हो जाए लॉन्ग में। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मॉड कर रहा हूँ, फिर इंटू एक्स करके फिर मॉड कर रहा हूँ। दिस इज बेसिकली टू फिगर आउट कि हमारा जो एलिमेंट्स हैं, हमारा जो वैल्यूज है वो रेंज के बाहर ना जाए। ओके, our main focus is not these things right now. If you have any problem, then do comment it on the video. I'll make sure to comment on that and I'll make sure to clear that doubt also. Okay, but basically आप ये समझ सकते हो कि we are here we are simply making sure that हम लोग की values out of range ना जाए, और हम लोग मेन चीज वही कर रहे हैं, आंसर प्लस एक्स क्यूब। ओके, नाउ हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पर, वी सॉर्टेड इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं इसको, एक काम करते हैं यहीं पे सॉर्ट कर लेते हैं अपने लोग, nums डॉट बिगिन कॉमन nums डॉट एंड, और हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। सो फॉर दैट रीजन आई एम राइटिंग ग्रेटर एंड। ओके, सो इट इज डन नाउ। नाउ व्हाट आई विल डू इज we have to maintain a bracket variable which is initially initialized to 0, and then we have to traverse from n minus 2 till 0. Okay, so we have to traverse it in reverse fashion. So for that I'll write n minus 2 I is greater than equal to 0, I minus minus. Here what we are doing now, we are writing bracket is equal to 2 into bracket plus nums of I plus 1. ओके, तो ये सीन है यहाँ पर। लेट्स डू वन थिंग, इसका भी हम लोग मॉड ले लेते हैं, बेटर बेटर रहेगा ये। ओके, अब ब्रैकेट हम लोग का यहाँ पर आ चुका है। नाउ हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपली यहाँ पर लिखना है आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस ब्रैकेट इनटू नम्स ऑफ आई इनटू नम्स ऑफ आई। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग ने मॉड कर दिया कि ये वैल्यू बाहर ना भागे, और यहाँ पर दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी अलग अलग हम लोग कर देते हैं। ओके, तो ये चीज अब रेंज में आ जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग को सिंपली करना है रिटर्न आंसर। ओके, सो नाउ इट शुड वर्क फाइन। या, नाउ इट शुड वर्क फाइन, लेट्स रन इट। ओके, देयर इज अ कंपाइलेशन एरर। अपन को यहाँ पर int n is equal to nums dot size भी लिखना पड़ेगा। So 141.17 is the expected answer. Let's submit it. So it is accepted. Okay. So after the problem analysis, we can say that the problem was not that difficult. It was quite observative. We can say it was mathematics, pure mathematics it was. Okay. So yeah, this was the main logic. हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सबसे पहले सारे ग्रुप्स जिसमें हम लोग सिर्फ एक एलिमेंट ले रहे हैं उन सबको पहले कंसिडर कर लिया, एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हर एलिमेंट के लिए निकाल के देखा, एंड देन वी फाउंड आउट अ कॉमन थिंग। जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन वी फाउंड आउट कि यार एक ब्रैकेट अगर वेरिएबल है, जो अपना ब्रैकेट जो अपना है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नम्स ऑफ आई प्लस 1 ऐड कर रहे हैं उसमें हर बार। ओके, तो ये काम हम लोग कर रहे हैं, एंड इफ यू थिंक द सॉल्यूशन इज नॉट क्लियर टू यू, तो ये जो मैं यहाँ पर आईडी पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, see this part again, and it is common observation. You will able to find out this observation by seeing this video again. And yeah, this is the solution. I hope you understood the solution by this video, and if there is any doubt then you can comment it. I'll definitely reply to that comment, and I'll make sure that your doubt is resolved. Okay, so yeah, that is it from my end, and yeah, we'll meet in the next video.